in corporates, have handled leadership management in HRM at various organizations, like Sir said, AVP HR for Plug HR. After that, I was director HR international for international organization for approximately 80,000 people company. And then afterwards, I realized that it is time to start something of my own. So that's why we started this organization called HR Human Rhythms. Human Rhythms is basically the heartbeats inside every human, and that is why Human Rhythms is the name of the organization. So I personally feel that HR is not human resources, they are not machineries, they are more of rhythms. That's why this name. So for with this, you can always know that how much I love HRM, and that is the reason why I got associated with YSI from last 4.5, 5 years. I think it's our seventh batch that we are taking together for human resource management. So a very quick introduction from all of you, if I can have, so that I know who I am interacting with. Let's start with Saurabh. The way I can see it, yeah. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Am I audible now? Yes, you're audible. Yeah, I can see you're in a So, ma'am, metro. actually, Yeah. just tried and it's spent some time. You just allow me to get trial at the last. Yeah, I can't hear you properly. Ma'am, actually, I'm traveling, so maybe because there will Yeah. be a lot of disturbance. So, can I Okay. like give my info at the last? Okay. Jaspreet. Yes, ma'am. Hi, Hello, Jaspreet. ma'am. Yeah. My name is Jaspreet Kaur and I am from Delhi. And my study background is I'm graduated from Delhi University in BCom stream. And after that, I did ITI diploma in computer operator and programming assistant. And now I'm doing the finance in YSI. Okay. Yeah. Okay. Good to know. Yes. Dheeraj. Good evening, ma'am. Good evening, team. Myself, Dheeraj. I'm a 2008 batch electrical engineer, and for last Very 15 nice. years, I have been working in different organizations with L&T, this Vedanta Group, and all into different roles. The project executions for power transmission, the project coordinator, the team coordinator, and the supply chain. Currently, I'm into a supply chain role. So it's been a altogether good experience with a different industry. I was into international for 5 years and last 10 years into Indian business. So looking forward for this HR session to understand more about the HR. Although we have been interacting all together all the years, hopefully this will have a different perspective of HR. Thanks. Okay. Great. Make. Though I know you, but yeah, for everybody else. Make Singh. Can you hear? Yeah, ma'am. Good evening. Good evening to all. So myself, Megzi. Right now, I'm just working in Panasonic Life Solutions, Haridwar locations, and I have just totals 18 years of working experience in purchase, supply chain management, production quality, and right now I'm just pursuing sales and marketing certifications from YSI. Okay. Great. Shreya. Good evening, ma'am. Hi. Good My, evening. my Yeah. name is Shreya. I'm from Bhopal and I've done my graduation in Bachelor's of Commerce in 2022. And after that, I've done 2 internships in Hedge Group of Companies. And currently, I'm pursuing my training in digital marketing from Technogis company in Bhopal itself. Okay. Great. Anjan. Good evening, ma'am. Good evening to all. My name is Anjan Chaudhary. Right now, I am working as a management trainee in HR in Fiducia Solutions in Noida.
and I am pursuing MBA in IT and HR from Guru Gobind Singh Indraprasth University. Okay. And I have 5 years experience with Cognizant in operations team, and I'm graduated in BSc IT. So, Wonderful. Okay. and I am pursuing in HR course in YSI. Wonderful. Okay. Then we have who? Srijan? Good evening, ma'am. Good evening, everyone. My name is Shrijan. I'm born and brought up in Varanasi. I completed my graduate year. I have been preparing for my master's, and last year have given my CAT, secured 95 percentile in CAT, but failed to get into my aspired B school. This year, I'm again preparing for the same exam, and I'm looking forward for an opportunity to enhance my profile, and that's why I came here to grasp some valuable knowledge. Okay. And Great. also, if quickly to highlight my strengths, it's I am am I exaggerating it? I'm sorry, ma'am. No, it's okay. Perfectly good. Go ahead. Okay, ma'am. So if to highlight my strengths, I am a problem solver. I see myself as a problem solver, a person who who likes to work with a team and to handle people. That's it, ma'am. Thank you. All right. Great. Welcome on board. All right. Who else is left? Okay, we have Suman who's left. Suman and Chimpy. Yeah. Please go ahead. Are you guys here? Suman, Chimpy, can you hear us? Yes, ma'am. All right. Hi, Chimpy. Can you please give your brief introduction before we start? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Simpi Kumari. I'm a student of Sunbeam College, Bhagwanpur in Varanasi. Currently, I'm pursuing BCom first year student and also doing this course, management course. Okay, great. And who's left? Suman is left. She has got disconnected. Okay, so let's start, right? Let me just start with understanding. First of all, let me know if you're all okay with English as the primary language for this session, or maybe a mix of Hindi English will do. Mix of Hindi English. Yes, Ma'am, ma'am. English is okay. Okay, great. So before we start the presentation that we have prepared for giving you an introduction in HRM, I want to know your expectations from HRM. What do you feel and how do you feel that HRM is used in the organizations? Some of you are already experienced, some of you are new. When HRM is used only for organization development to identify the loopholes of the organizations. So Okay. the perspective of HRM is to manage how to handle the situations in the organization, how to handle the teams, how to solve the problems of the employees, Okay, good. Yeah. and how to retain the right talent, and how to hire a new talent in the organization, and how to work strategically. Right, good. Yes, ma'am. Okay, yeah, good number of points you've covered. Very nice. Anybody else who thinks a little different from what he's saying? It's mostly As a about that. fresher outlook, Yes, Srijan. you may continue. You may continue. No, it's okay. You can take it. It's okay. Okay, thank you. As from the fresher outlook, I see HR as a role which is pervasive. Like HR stands for human resource. HR, for me, HR is pervasive because it deals with talent acquisition, as someone has said this earlier. It deals with the talent acquisition and getting the desired results with proper It's okay, take your time. That's okay. Yeah.
Okay. Sorry, ma'am. No, no, it's okay. That's all right. It happens sometimes. Yes, ma'am. So for me, it's just like HR is required at all levels in management. Right. Good. Yes. Anjan, you were saying something earlier? No, ma'am. I said that only it works strategically and Okay. please. I mean, my point is that I think humans or the manpower is the strength of any organization. Whatever the technology comes or anything comes in place, the human power or manpower, it is the ultimate thing at the worker level, also at the management level, also. So my Correct. perspective Yeah. is that True. it plays a major role. Whatever the technology comes in 2022 or 2050, that has to be means monitored well, regulated well. So the take care of the employees in hand with a HR team only. So they plays a major role in the company growth. Although we compare this as a support function, but for a Hmm. company growth, I think this should be taken at the this should be at the upfront. This is my opinion. I think. Yeah, so different people have different versions of HR with how much experience they have gone through, with the department. If they're working in the organization, then maybe while their own experiences, if they have not worked in the organization, so people go by hearsay. What people have suggested, what people have said कि salaries देते हैं, सिर्फ salary काट लेते हैं, hire and fire करते हैं. So these are very popular opinions about HR. Most people also see कि रंगोली बनाने के लिए HR का बहुत काम होता है. So these are very unpopular versions of HR. Unfortunately, because engagement, जब हम बात करते हैं organizations में, a lot of people think that HR's work is just providing engagement through celebrating festivals, through doing these rangoli parties and all those things. But engagement really doesn't come from just celebrations. Engagement means that every employee who is employed in the organization, whether they are in sales or logistics or any other functions in the company, these people should feel happy when they are in the organization. If not happy, then at least satisfied and content. So that contentment, that satisfaction, everything has to be measured by one department, and that department is called human resource department in the organization. So our work is, yes, to bring the people, right people in the organization. Other than that, taking care of them, their welfare, anything you do with HR that you can think of, maybe in your colleges, in your home, wherever you go, everything is done by human resource management department. And that's the function of human resource management. As we move ahead with this presentation, whenever you feel it's getting a little boring, we can get into a discussion mode and discuss. And in the meantime, I would just love to take you through this particular basics of human resource management. You can see the slide, right? Yes, we can see it. Yes, ma'am. All right, great. And during the lecture, in case you want to talk to me, you can just raise hand. There is a version of Zoom which allows you to raise your hand. I'll see that in hand and then you can talk. Right? That works? Perfect. Yeah, Okay. yes. Okay, so like you can see this particular PPT, this slide, it talks about recruitment as a function, training as a function, value addition as a function, planning, coaching, retention, and reward. So these are major functions of human resource management that we generally keep. In between these functions, there are a lot of other things which keeps going on between the HR departments. So as a lot of people are talking about human resource management's definition. The definition basically says it's the collection of people and the characteristics at work. These are distinct and unique to each organization in several ways. So imagine now you're dealing in an organization with 1,000 employees. 1,000 employees means 1,000 different kind of brains that you have to work with. The scientists say that the most complex thing in the world is the human brain. So imagine when you're working with 1,000 different complexities in one setup
and managing them in a different setup, that is the work of human resource management. This is a definition given by one of the HR author. A whole consisted of interrelated, interdependent, interacting psychological, sociological, and ethical components. Then the next definition talks about human resource management, which is concerned with policies, practices that ensure that the best use of human resources for fulfilling the organization and individual goals. So every time you are getting associated with an organization, हर बार आपका अब तक गोल पूरा करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, whether it is a financial goal, it is a career advancement that you want to take, whether it's your personal growth, professional growth, all these goals are supposed to be aligned with the organizations through their policies and practices, and that's when we grow, right? And that is the function of the human resource department, to ensure that every employee who is working inside the organization should be able to fulfill their own goals along with organizational goals. Now, these are the few characteristics. The characteristics of human resource basically talks about everything that has to do with human people, right? Whether you call it in some organization, that is the reason why this function is called as human capital. Some organization now call it people management function. Some people call it people-centric function. So HRM has now been given different kind of names in various organizations, purely because now people have started understanding that human resource, that resource word is not really particularly fitting into the right profile. Resources are basically raw materials. Resources are basically used for products and services that you create. So that is the reason why anything to do with heartbeats, anything to do with somebody, who can think, can actually bring in their own mindset into the picture, working in organization, cannot be called as resource. So the characteristics of human resource management is basically, it is people oriented. Anything and everything to do with people, whether their safety, their security, their welfare, their happiness, their contentment, their stay in the organization, जितना भी टाइम वो लोग रहते हैं उनका satisfaction level चेक करना, जब तक वो बाहर नहीं चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इनफैक्ट जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं तब भी उनका एलुमनाई सेक्शन बना के रखना, उनको डेटाबेस में मैनेज करके रखना, उनके साथ टच में रखना, is what is HRM basically does. It is action oriented. So you cannot have an human resource manager sitting on a table on a laptop and working in HRM. It can never work like that. कितना भी digitization आ जाए, कितनी भी artificial intelligence की हम बात कर ले, that we can bring in to bringing more technology into the organization, but one thing can remain the same, that the human touch that is required for people to connect on emotional level can be provided by this department. And that is the reason why you will see that more women are successful in human resource management. I'm not saying that the men cannot really perform. All large organizations have men as their HR head or CHROs, but women perform much better in this function purely because of the fact they bring emotional intelligence into the picture. Then individual oriented. So imagine now, like I gave you an example, if you are working with 1000 employees and you have to deal with their different problems, their different mindsets, the way they think, the way they bring their own challenges into the working space, you have to manage and take care of everything at once. Development, of course, when you join an organization, you join because you want to develop, whether it is a career advancement, your personal development, or a professional growth. Everything to do with development is a characteristic which comes under human resource management. All pervasive function, like right now when we were taking the introduction, somebody said that it's an all pervasive function, right? So all pervasive function means that it is everywhere. Wherever you will find human resources in the organization, you will see that you will require it. So it can be marketing department, it can be logistic department, problems to same rahenge, human beings bhi same rahenge. So it doesn't really matter that which employee is working in which department. The challenges, the problems, everything that has to be handled by human resource management. That is the reason why in larger organization, how it works is basically they provide for a smaller section of employees,
They give one HR Spock. HR Spock means one single point of contact in HR. So one person can take care of a problem of 50, 60 people at once, right? Not more than that. So imagine if you're working in 1,000 people employee company, you need to have at least 40, 45 people who can take care and ensure that HR department is working really, really fine in the organization for the best results to come. Most of the organizations, what they do is for 1,000 people, they might hire 20 people. That's all. 20 to 1,000 ka ratio doesn't really work really well. The best ratio that has worked in organization, and it is scientifically proved also, for 50, 55 employees, you need to have at least one HR above them so that that person can entirely take care of their problems, right from recruitment to onboarding to performance management, training and development, their exit, in between their engagement and happiness, customer satisfaction, employee satisfaction, all that. Then continuous function. So all pervasive तभी है जब it's a continuous function. You cannot stop HR in between. For example, the production can still, may not work in a manufacturing industry due to machinery not been working. But with human resource management, it cannot really be the thing. So when people say कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे का ऑफिस आवर्स है, उसी टाइम में काम करना है, it doesn't really work. 9 घंटे तो आप ऑफिस में है, पर 9 घंटे के घर के बाहर भी, I mean ऑफिस के बाहर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. So there are many problems that we have faced when people were not really on duty, but still they faced that problem. As an HR head, we had to resolve that. Right? For example, हमारे एक एम्प्लॉय यहाँ से हैदराबाद में किसी कंपनी के थ्रू हैदराबाद गए थे जॉब पे, and he had a heart attack at night and he was all alone. So imagine somebody called us and you had to arrange all the medical facilities, everything cashless, his medical card and everything. So all those things can be done by HR even after their duty hours. So that is the reason why it's a continuous and all pervasive function. Anything can happen at 2 o'clock in the night. Even a fire at office or industry is again an HR problem. Right? So similar such things can happen and it can be handled by this department. Then future oriented, right? So why it is future oriented? Why we'll have to see into the future? Purely because we have to do a lot of planning in terms of how many people we need for the company to grow in the organization. So अगर आज की डेट पे 50 करोड़ एम्प्लॉय टर्नओवर करने के लिए आपके पास 100 लोग हैं, सो नेक्स्ट ईयर अगर आपको कंपनी को ग्रो करना है, 10% ग्रोथ पर भी काम कर रहे हैं अगर कंपनी 10% भी ग्रो करना है, तो आपको और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड दिस मैन पावर प्लानिंग डजंट गो रियली दैट वेज ओनली कि 1 साल के लिए 10%, जनरली 5 साल आगे का सोचकर चलते हैं एचआर डिपार्टमेंट, एंड दैट इज हाउ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज बीइंग डन. That is why you will see a lot of organization keeps hiring all the time. So they are not hiring because their people are leaving in the organization. They are hiring all the time purely because they want to grow. And they want to grow at a rate where they are bringing the right kind of people in the organization. उनके पास टाइम होता है कि अभी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, मे बी फ्यूचर 6 महीने के बाद है, but the function starts right now so that you can bring the right kind of a person according to the needs and requirements of the position. Then challenging. Of course, it is challenging. Like I said, human mind brings different complexities. जितनी complexities हमारे brain में चलती हैं हर वक्त, इतने सब अलग-अलग positive, negative thoughts. With all that, you need to ensure that people are happy within the organization. Now imagine, how many of you see Big Boss? अभी नॉट रिसेंट वाला, कोई भी किसी भी साल का कभी भी बिग बॉस देखा हो तो? Yes, I have watched Big Boss once earlier. Right? So anybody else who has seen that, or they know the idea of what Big Boss is all about? You can raise your hands if you know or if you don't know. Okay, Srijan is raising hand. Who else? That's all? Just 2 people know about what Big Boss is? बाकी सब टीवी नहीं देखते हैं? नहीं भी देखते हो, पता तो होना चाहिए. When I don't watch TV, I don't watch Big Boss.
But yeah, I'm aware what happens in Big Boss, right? So imagine there are 13, 14 people put together in a house without any media. There is no social media, there is no phones, there is nothing else, there is no family members involved. Similar things happen in the organization. Every day for 9 hours, you have an employee who is there. एंड वो लोग 13 लोग हैं सिर्फ एक घर के अंदर. यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मान लो 25 से लेकर 100,000 80,000 तक एम्प्लॉयज होते हैं. Imagine if you know the complexities that goes in the psychological problems and the things that goes in the Big Boss house. Lot of negativity, lot of politics around each other, not having good teams. People are not ready to accept each other as team members. ये सब problems, practical problems हैं जो हर रोज आती हैं. You put them in a team, एक project पे काम करने के लिए, they will say, I don't like that person, I don't want to work with that. फिर क्या करोगे आप? So then it goes to HR. They will give them counseling, they will mediate, and they will convince, it's a team, it's an office, it's an organizational goal, you have to work towards that, you have to start. And it may be sounding very easy right now because I'm just saying it in 2 lines, but when you actually practically do it, it takes huge amount of time and effort, right? Convincing these people. So imagine such level of different mindsets coming together. Every individual, अभी आप लोग 10-11 लोग हो यहाँ पर, right? Every one of you is from different sector. Every one of you is from different cultural background, different region of India. So इतना सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी you are here purely because you have a goal that you want to attend these classes. So similarly, all these people go inside an organization for one particular goal, that we have to earn money and we have to provide our services in return. बट इतना सिंपल होता नहीं है क्योंकि हमारे अपने डेली के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते रहते हैं, राइट? Sometimes I'm not happy with the food that is being provided, I'm not happy with the transport, I'm not happy with the table that I have been given. हाँ, मुझे बिठाया है, वो लाइट अच्छी नहीं आ रही है वहाँ पर. So imagine all these problems of 1,000+ people every day, right? Something or the other. And that is why it becomes much challenging than any other functions in HR, in organization. Then it is a science as well as an art, right? Why we call it science? Purely, because it's a psychology of people which is on use. You have to really look into very deeply inside a human brain to understand what is going on. And still you cannot really make out what they want. Plus, it is an art, pure again, because you have to convince them a lot of time. You have to really work around with people, making it look like that it is really very feasible for the organization to work in a different manner altogether, while everybody else has to be convinced and happy about the same thing. So imagine अगर आप एक policy launch कर रहे हैं organization में as an HR, right? Simple सी policy लेकर चलते हैं. So policy is about dress code. You have to introduce dress code in the organization, that people can come in semi-formals, they cannot wear ripped jeans, they cannot wear jewelry, they cannot wear all that things, जो काम नहीं आती ऑफिस के अंदर. अब उस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए भी you need to work around people's mindset, क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, especially the younger generation today, which is going to work in the organization, really does not get convinced about all that, right? So that is the reason why it is a science when it comes to the principles of human mind, and art when you have to launch and introduce certain policies and procedures in the organization and how you do it. Then it's a staff function, yes, because it's working with employees. So every organization in every department requires staffing, which is people at adequate level, at adequate function working in the organization. So that is why we call it staff function. So that's one of the characteristics. It's a young discipline. Purely, I'll take you through the history of how HR started. So it's a young discipline, what HR we are talking about right now, purely because पहले इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता था. People used to, if you see our history, लोग generally employees को या लोगों को use करते थे organization के अंदर just as a machinery, and that is why this human resource name was also given at that particular time period. So that human factor, the emotional touch, that feeling of oneness with one another, उनकी understanding, ये सब चीजें नहीं समझे जाते थे. That is why it is a very young discipline in comparison to other things like production and manufacturing and all that. Right? Now it's a nervous system of the organization.
So why we call it nervous system? इसका एक छोटा एग्जांपल देती हूँ. When I joined my organization, my first organization, मेरे mentor ने मुझे बोला था that human resource is the heart of the organization. Right? If you are not meeting correctly in the right manner, nothing else will work in the right manner in the entire organization. So heart का क्या काम होता है? Pump करना blood को और उसका circulation करना पूरी body में. So imagine that is what HR is to do in the organization. Right? Any questions on this slide? Or we move ahead? All good? Ma'am, just about the science, can you explain a bit more? How it So is a science, science? yeah, science because it's psychology, right? You are dealing with people's mindset all the time, right? So psychology is a science, right? Other than that, there are other functions of HR like learning and development, performance management system. They're all based on scientific factors and researches. जो भी आप लर्निंग इंट्रोड्यूस करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है. यू नो, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग दैट वी आर गिविंग through YSI to you, it is a science basically. We are aware that not 12 people who are attending this session may understand HRM at one go. But because of these sessions, some of you might be able to understand or become more curious to know about HR in future. And that's when you can change and decide that, okay, maybe I can create my career in HR. And that is why it becomes 100% science. No, not 100%, but yeah, some part of science comes into that. So everything that we deal with, basically right to start with the sourcing of the people, that is a science in itself. That how many people is required in the organization, it's a complete scientific formula. You don't really have to put your anything else into it, right? Then obviously when people are coming into the organization, how you have to ensure that their needs are fulfilled. All of you, when you are going to join the organization, one reason obviously when you are going to join an organization is financial security. That's what you join it for. But other than financial security, you need more from the organization, right? Imagine आपको हर मंथ सैलरी मिल रही है पर काम नहीं मिल रहा आपके हिसाब से. So will you be happy in the organization? थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा कि काम नहीं है, but maybe for longer time period, will you be happy? You won't. No. Right? Correct. And imagine a scenario when you are getting a monotonous work every day, similar work. ऐसा ही करना है, रोज करते जाना है. There is new change, there is no challenge involved, there is no problem solving or analytical skills, so you're not putting your brain into that work. So will you be happy in the organization? The chances are no. So according to the diplomas, the degrees, that education background that you have, you may not be happy with whatever the organization will give. And that is why it becomes science, because we in human resource management, we have to understand what people require every point in time, apart from their salaries and rewards that we have to give. And then accordingly, we design different policies, we design different benefits, we design different rewards and recognition programs so that people can stay satisfied. Again, with that, 100% people cannot be satisfied in an organization. So you can at least try to take care of the maximum lot. Right? Yes. I hope it makes sense now. Okay. Yeah. Anybody else has a question? All right, so with that, let's move to the objectives of HRM. Some of them I've already told you while we were doing the previous slides. So basically the function, the objective is to act as a liaison between top management and employees. So sometimes that is the reason why people feel, you know, जो आप majorly सुनते हो कि HR का काम है hire and fire करना, HR is also an employee in the organization, so they do not have the right in their hands to do hire and fire. That decision of whether to keep somebody in the organization or to let go comes from management, the people who run the organizations, right? But because HR becomes the face of the management, उनका जो balance है वो बनाने के लिए, that is why it is called the liaison between top management and employees. Similarly, अगर employees को कुछ problem होती है, at some level they are not happy with the lighting, they are not happy with food, they are not happy with
their seating arrangements, they're not happy with their work profile, their managers, anything to do with that, their teams. So they also come to HR, and then HR's responsibility is to put it across to the leadership and the top management, right? So that it can be resolved and people can bring in the best results out of it. So that is why the liaison between top management and employees. Then to arrange and maintain adequate manpower inventory. So like I said earlier in previous slides, we have to ensure that at every time, in every department, the adequate number of people are always there. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 50 लोगों का काम है और आपको काम 20 लोगों से करवा रहे हो। उसमें क्या होता है, फिर रात भर लोग काम कर रहे हैं, people are working on weekends, they do not have holidays, they do not have work life balance, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ होता है जहाँ पर मैन पावर इन्वेंटरी प्रॉपरली नहीं होती। When I say manpower inventory, it means that right amount of people doing the jobs that is required to do in the organization. Again, it's a scientific method which we call workforce planning or manpower planning in the organization. Then third is to devise employee benefit schemes. So अब like we said कि सिर्फ पैसा खुशी नहीं दे सकता है, right? So you need more benefits. You need benefits, और जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपका लेवल बढ़ता जाता है, somewhere you need other things also, right? अब for बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ. When you join an organization, suppose you join an organization and you are earning decent amount of money, जिससे आप एक मारुति 800 या मारुति ऑल्टो 800 तो नहीं बन रही है, मारुति ऑल्टो आप अफोर्ड कर सकते हो easily, right? Maybe on EMIs or maybe on cash, however you want to buy, right? बट जब आप ग्रो करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी सैलरी बढ़ रही है, सो आई एम श्योर कि आपके डिमांड्स भी बढ़ेंगे, आपके डिजायर्स भी बढ़ेंगे. यू वोंट बी हैप्पी विद ऑल्टो, राइट? यू मे रिक्वायर सम अदर कार्स एट सम पॉइंट इन टाइम. It can be, Hyundai, it can be a Honda, it can be Mahindra, any other better car that you would require as per the status. खुद को चाहे खुशी ना भी होती हो सिर्फ कार्स लेने से, but because you have to maintain a status quo in the organization, because आपका लेवल अब बढ़ रहा है उसके हिसाब से. So ऐसे ही बेनिफिट स्कीम्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में HR को तैयार करने पड़ते हैं, इंश्योरिंग कि लोगों को पैसा तो मिल रहा है, पर पैसे के साथ और क्या बेनिफिट स्कीम्स मिल रही है at every level when you're going in the company, right? Then to ensure it enhance the quality of work life. So now quality of work life is basically maximum amount of time a human being who works in an organization spends for organization, not for themselves, not for the family, right? So जब आप maximum आपका जागता हुआ time, because 8 घंटे तो घर जाके सो ही जाते हैं, 6-8 घंटे तो सोने में ही जाते हैं, so maximum waking up time we spend in organization. तो अगर वहाँ क्वालिटी नहीं मिल रही है वर्क लाइफ में, खुशी नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है किसी भी रीजन से, सो दैट मीन्स यू आर नॉट रियली सेटिस्फाइड, यू विल नॉट स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग. फिर आप वो कंपनी छोड़ दोगे, आप बेटर कंपनीज ढूंढना शुरू कर दोगे. एंड दिस क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैन कम थ्रू एनीथिंग. It can be like, it's a very small thing like not having a proper light on your head or on your system, उसकी वजह से आपकी आंखों में पेन हो रहा है, आपसे काम नहीं ढंग से हो रहा है, कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहा है. टू नॉट हैविंग अ गुड मैनेजर और अ टीम मैनेजर टीजिंग यू, टीममेट्स के साथ नहीं बन रही है, उनका बिहेवियर बहुत अलग है, कुछ भी रीजन हो सकता है. सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हैज मेनी फैक्टर्स इनसाइड इट. देन ऑफर ट्रेडिंग, of course, because जब भी आपको ग्रो करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, you need lot of learning and development, and that learning and development is run by HR departments purely because they understand the mindset of the people. You cannot be satisfied with how you joined. अगर आप executive level पे join किए हो, तो आप जब भी 5 साल बाद 10 साल बाद आपको promotions नहीं मिल रहे on a regular interval, you will never be happy. So imagine some of you are working in organization for 5 years, 4 years, 8 years, 17 years, right? That's what you told me. अब क्यों आप फिर भी पढ़ने के लिए आ रहे हो, YSI से आप डिप्लोमा कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, right? Purely because you want to train yourself. You want to train yourself in better things that is going ahead. चाहे वो डिजिटल में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे फाइनेंस में हो, you want to learn something new and you want to implement all those new things so that you can get that promotion. Maybe you can get advancement in your career in your organization. Correct? So this is what training does for organizations.
for the people, for the employees. फिर आता है ethical values and behavior. For sure, जब हम families में रहते हैं, अपने अपने घरों में हमारा cultural value system होता है. Honesty रखना, parents के साथ झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ये सब basic से values हैं जो हमें सिखाए जाते हैं. Similarly, organization is a larger system, bigger than families. So वहाँ के भी अपने ethical systems and values and behaviors होते हैं that you need to show. घर के अंदर आप still रो सकते हो, अपने मम्मी पापा से जिद कर सकते हो, but can you do the same kind of thing in the organization? You would. So there is a certain amount of behavior जो आप घर के अंदर या बाकी सब सोसाइटी में आप दिखा सकते हो, but organization में आप वो behavior नहीं दिखा सकते on a daily basis. So this is the difference, and that is that change of behavior and how people balance these two behaviors is basically the job of HR to look into. Right? फिर आता है to maintain high morale and good human relations with organization. Of course, HR का काम ही यही है. Sorry. Right? आपका जब morale, motivation नहीं high होगा, अच्छे human relations एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, you will never feel happy working in an organization. You have to give me a 2 minutes time. Sorry, I'm just coughing too much. Yeah, sorry. Okay. So we were at the last point. So it's important that we need to maintain the high morale and motivation. Again, I'm repeating it a lot of time during this presentation, but because it's a fact. 100,000 employees, जितने भी ज़्यादा employees होंगे, every employee would need a different kind of motivation, right? Not just financial. Some people can have motivation because they want to join the organization for challenging work. Some people want to become very good managers in the organization. सभी का जो level of achievement है, accomplishment है, their own desires and to join an organization differs. Right? First, obviously, remains the same, which is financial. The secondary or thirdly, people generally have a different kind of motivation behind joining the organization. So we have to ensure as an HR that what is it and how as an organization we can really look into that and give them more morale so that जब सुबह ऑफिस जाना हो तब खुशी से ऑफिस आए इंसान. It should not be like डंडा दिख रहा है, जबरदस्ती आना है, पैसे कमाना है, इसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़े. So that should not be the case for most of the people that should come into the organization. Right? Now coming to the more technical things in HR. What is the scope? What are the things that comes under HR in most of the organization, and what aspect of functions in an industry or in a company you can think that of as an HRM? So सबसे पहला aspect होता है personal और labor aspect. Personal aspect मतलब जो हमारे से individual से जुड़ा हो.
So that is planning. How many people, what time, when required. रिक्रूटमेंट कहाँ से उनको लेकर आना है, कौन सा पोर्टल से यूज करना है, लिंक्डइन यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, कहाँ से अच्छे से सोर्सिंग करके एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना है ऑर्गेनाइजेशन में. देन सिलेक्शन ऑफ पीपल. अगेन सिलेक्शन इज अ साइंटिफिक टेक्निक. सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? इंटरव्यूज के थ्रू, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है कई लेवल पर, इवैल्यूएशन होता है अलग अलग लेवल पर, एंड देन यू हायर द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Then their placements. Placements in the organization means कि किसको कहाँ place करना है. अभी तो आप लोगों ने खुद चूज कर लिया है अपना स्पेशलाइजेशन more or less, right? पहले क्या होता था, अभी भी बहुत सारी कंपनीज के इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि they hire a lot of graduates from Delhi University or such universities. वहाँ पर उनको प्लेस करने के बाद they take people for internship for 3 to 6 months. उस इंटर्नशिप के बाद हम डिसाइड करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसको कौन सा डिपार्टमेंट में प्लेस करना है, purely on the basis of their interest and the way they have worked in the department and their scientific knowledge. Because no matter how you feel, हो सकता है कई बार आप अपने करियर में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहे हो काफी साल के बाद काम करने के बाद भी, प्योरली बिकॉज आप उस काम को करने के लिए बने ही नहीं हो. And when I say that, again I put the psychometric testing in between. आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन और ये सब चीज़ें हम लोग एक टेस्ट के थ्रू डिसाइड करते हैं. वही टेस्ट डिसाइड करता है कि आपको एक्चुअली किस काम करने के लिए बने हो और उसमें आप सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है. अगेन 100% एक्यूरेसी नहीं है इन टेस्ट की, बट 75 से लेकर 90% एक्यूरेसी के साथ ये टेस्ट कामयाब रहते हैं टू डिसाइड. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू विल सी कि आजकल बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ने करियर कोचेज एंड करियर काउंसलर्स रखनी है. करियर कोचेज और करियर काउंसलर्स का काम ही यही है टू डिजाइन एंड डिसाइड पीपल, हेल्प देम डिसाइड which स्पेशलाइजेशन, which कोर्स दे शुड टेक, जहाँ उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. आपने सुने होंगे अपनी लाइफ टाइम में, आई एम श्योर कितने सारे केसेस ऐसे होते हैं कि उसने इंजीनियरिंग कर ली पर उसका मन नहीं लग रहा है इंजीनियरिंग में. पढ़ाई कर ली, एग्जाम पास कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर ली, बट फिर काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. Similarly with people who are medical doctors, similarly with people who are MBAs, people who are CAs. So बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा करियर चेंज कर लिया purely because they were not happy. That is why placement of every employee in the organization is very very important and crucial. इसी को करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्रॉस फंक्शनल मूवमेंट भी रखते हैं. क्रॉस फंक्शनल मूवमेंट मतलब अगर आप हैप्पी नहीं हो अपने किसी भी डिपार्टमेंट में पर आप अच्छे हो, आई मीन यू आर लॉयल, यू आर हार्ड वर्कर, यू आर डेडिकेटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. सो कंपनीज भी एफर्ट लेती हैं कि उस एम्प्लॉय को अगर ये सेल्स में नहीं चल रहा है तो इसको मार्केटिंग में डाल देते हैं, लॉजिस्टिक्स में डाल देते हैं, HR में डाल देते हैं, जहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने. देन आते हैं ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस ऑब्वियसली बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. कई बार आपको डिफरेंट ब्रांचेस में, कंपनी के बाहर, वो सब जगह पे ट्रांसफर होता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी ट्रांसफर होता है. सो ये सारे के सारे पर्सनल एस्पेक्ट्स HR के अंदर आते हैं, वही लोग हैंडल करते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स अगेन. देन आता है ले ऑफ्स एंड रिट्रेंचमेंट. Now layoffs, अभी आप सुन ही रहे हो, बहुत सारी कंपनीज, all edtech companies majorly are doing layoffs. किसी की भी उठा लो, बायजूस उठा लो, Unacademy उठा लो, anyone that you think of, Ola उठा लो. So many companies which is into tech, especially edtech, are laying off their employees. Why are they laying off their employees? Again, because they did not do the manpower planning correctly. So manpower planning correct नहीं होता है, इसीलिए lay off करने पड़ते हैं. Extra people hire कर लिए, पता ही नहीं है. Imagine, I think which one, Ola is the company जिन्होंने 200 रिक्रूटर्स को एक साथ हटाया है. So 200 रिक्रूटर्स in Ola. Imagine कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जहाँ पर 200 रिक्रूटर्स की उनको जरूरत पड़ती. They could have easily outsourced it to somebody. इसमें उनका खुद का पैसा बच जाता, लोगों की करियर नहीं खराब होती. तो ये ले ऑफ एंड रिटैचमेंट का सारा फंक्शन HR को हैंडल करना पड़ता है. द डिसीजन इज नॉट देयर्स, किसको निकालना है, क्यों निकालना है, बट यस कैसे निकालना है और क्या क्या उनको सेपरेशन पैकेज देना है, कितने महीने की सैलरी देनी है, किस तरीके से उनको गुड बाय बोलना है, ये सब काम HR के अंदर.
not a very human factor, but yes, we have to do this. And this is the most hurtful thing that most HR stay away from. सबको डर लगता है कि layoffs और retrenchment ना handle करना पड़े. फिर आता है रेम्यूनरेशन, राइट अमाउंट ऑफ सैलरी, क्या कंपनसेशन देना चाहिए किसको किस लेवल पर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, या वट एवर स्किल्स दैट यू ब्रिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगेन इट्स अ साइंटिफिक फंक्शन ऑफ कैलकुलेटिंग and managing and knowing what is going around and then doing that. फिर incentives भी remuneration से related ही है. जो लोग डायरेक्टली सेलिंग कर रहे हैं बाहर सेल्स डिपार्टमेंट में, यूजुअली आप देखोगे उनके इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं प्योरली बिकॉज ऑफ देयर वर्क, दे आर डायरेक्टली ब्रिंगिंग द रेवेन्यू. बाकी सब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोर्ट फंक्शंस हैं, एवरीथिंग एल्स इज सपोर्ट फंक्शन फॉर सेल्स, तो उनके इंसेंटिव डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं. सो अगेन दिस डिज़ाइनिंग पार्ट एंड हाउ द इंसेंटिव्स इज टू बी कैलकुलेटेड एंड गिवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ द HR. प्रोडक्टिविटी, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होगी कि आप 9 घंटे अगर आप हो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के अंदर 9 घंटे में आपने कितने घंटे का काम किया है, राइट? दैट इज बेसिकली प्रोडक्टिविटी. सो फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स, फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी फॉर्मूलाज, जनरली एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क फॉर मोर देन 6 आवर्स. जो बेस्ट टू बेस्ट एम्प्लॉयज हैं वो भी सिर्फ 6 घंटा काम करते हैं, बाकी 3 घंटे हम काम नहीं करते. सो दैट्स प्रोडक्टिविटी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी कैलकुलेट. फिर आता है एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर एस्पेक्ट. वेलफेयर एस्पेक्ट इज अगेन रिलेटेड टू कैसा आपका हाउसिंग होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. हाउसिंग, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हाउसिंग प्रोवाइड करती हैं. आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा सिस्टम है, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, कैंटीन या कैफेटेरिया है वो कैसे होंगे, रेस्ट रूम्स या वॉशरूम्स किस तरीके से होने चाहिए, क्लीन हो हर वक्त, यू नो. सो ये सब वेलफेयर एस्पेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं. हेल्थ एंड सेफ्टी, एजुकेशन एक्सेट्रा, राइट. फिर आता है इंडस्ट्री रिलेशन एस्पेक्ट. इंडस्ट्री रिलेशन एस्पेक्ट्स जनरली इज इन दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर हम लोग एम्प्लॉय करते हैं. लेबर्स आर पीपल हु आर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड. दीज आर द पीपल हु डू नॉट रियली हैव द राइट अमाउंट ऑफ एजुकेशन दैट दे गॉट और स्किल्स दे गॉट, इसीलिए उनको वो करा जाता है. इसीलिए इन लेबर्स को जनरली रखा जाता है यूनियन मैनेजमेंट्स के अंदर. डिफरेंट यूनियंस बन जाती हैं, ट्रेड यूनियन. जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में काम करोगे या जो करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में. सो ये यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि बहुत बार यूनियंस कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है HR डिपार्टमेंट के साथ कि हमें इसी तरीके की फैसिलिटी चाहिए, इसी तरीके की सैलरी चाहिए. ये सब सारी चीज़ें HR हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन में. देन ग्रीवियंस हैंडलिंग, आपकी ग्रीवियंस है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वेदर इट इज़ पॉश विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, या आप खुश नहीं है या आपको पता है कि आपकी कंपनी में कुछ अनएथिकल चीज़ चल रही है, या दो लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है. तो ये सब ग्रीवेंसेस आप कंपनी के अंदर लेकर आते हैं. दैट इज अगेन HR डिपार्टमेंट्स जॉब. देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे लोग कंपनीज के ऊपर केस करते हैं, बहुत एम्प्लॉयज़ कंपनीज के ऊपर केस करते हैं, स्पेशली ऑन द लेबर लेवल, क्योंकि अभी भी हमारे जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा लेबर प्रो है, कंपनीज प्रो नहीं है. इसीलिए लेबर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है अगर वो केस करते हैं. टाइम ज़रूर लगता है उसके अंदर, पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं. तो इसमें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से HR डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है वो उनकी तरफ से सेटलमेंट कर देता है डिस्प्यूट्स का, सो दैट इट डजंट रियली गो टुवर्ड्स द लीगल वे टू मैनेज दैट, राइट. सो दीज आर ऑल द मेजर फंक्शंस of HR. Any questions on this one? And it's not necessary कि जो finance में है उनको नहीं इसके बारे में पता होना चाहिए, या जो sales में है उनको नहीं पता होना चाहिए. Like we said, you know, HR is an all pervasive function. आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपको HR की जरूरत रहेगी हमेशा ही, right? A lot of things for your stay in the organization is related to human resource department. So the more you know about this department, the functions of this department, the more you will be able to deal with them nicely. ये आगे मेजर फंक्शंस जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. हम जनरली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ अलाइनमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिवॉर्ड एंड सोर्स, which is diversity and inclusion, engagement, competencies and retention in the organization. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. Some of them I've mentioned here, some
are not mentioned here. Right? So for example, alignment के अंदर जैसे आपका onboarding करना, जिस दिन आप पहली बार organization के अंदर जाते हो, अगर आपका onboarding और induction अच्छे से नहीं होता है, so you don't feel connected to the organization for longer time period. So that is the reason why many organizations have started डिजाइनिंग इतने अच्छे तरीके से ऑनबोर्डिंग में इतनी क्रिएटिविटी के साथ करते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स है देने के लिए. वी डिड लॉट ऑफ थिंग्स. वी डिड ट्रेजर हंट गेम फॉर पीपल हु वर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. उनके लिए क्लूज छोड़ दिया अलग अलग जगह. एक क्लूज छोड़ दिया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे, एक रिसेप्शन पे, एक उसके आगे. सो जहाँ जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते चले गए उनके लिए क्लूज छोड़ दिए. सो वी लेट देम एंजॉय फॉर एटलीस्ट 1.5 hours. वी प्लेड दिस गेम विद देम and they were all happy because it was a very different experience for them in the company. So totally depending upon company का say क्या है, कितना वो लोग इसके साथ involved रहना चाहते हैं, and how you want to really create that experience for people. So HR department is all about giving experience. आप खुश हो जाएं. जैसे आप 5-star होटल में जाते हो और एक आप नॉर्मल 2-star होटल में जाते हो या 3-star होटल में जाते हो, what is the difference? कमरा सेम ही रहने वाला है, बेड भी होगा, सोने के लिए जगह भी मिल जाएगी, एसी भी मिल जाएगा, बट व्हाट इज दैट डिफरेंस दैट यू गेट फ्रॉम 3-star होटल टू अ 5-star होटल? क्या डिफरेंस होता है? सर्विसेज, राइट, सर्विस डिपेंड करती है. और कुछ सर्विसेज के अलावा द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड राइट, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, करेक्ट. amenities, ambience, Sorry, ambience, amenities, right, supplies. ambience and amenities, supplies, facilities. facilities, right? So it's all about the delight factor that you get. Right? 5-star होटल में आप जाते हो तो आपको वो डिलाइट फैक्टर मिलता है जो आपको 3-star में नहीं मिल रहा. 3-star में बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एमिनिटी सब कुछ, जिसके लिए आप खुश होकर रह भी सकते हो. बट जो 5-star आपको एक्सपीरियंस देते हैं या 7-star या रिजॉर्ट्स आपको एक्सपीरियंस देते हैं, दैट यू वोंट गेट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई onboarding is important in organization, is to give you that delight factor and experience in the organization. बहुत सी कंपनीज कुछ नहीं करती हैं ऑनबोर्डिंग के लिए. आई एम श्योर सम ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड इट. आपकी कंपनी में इतना कुछ कोई अच्छा खास वेलकम नहीं हुआ होगा. सिंपल प्रेजेंटेशन, एचआर पॉलिसीज दिखा के पीपल वुड हैव टोल्ड यू कि कम एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल, दैट्स इट. राइट, बोरिंग सेशंस. Some organization takes that pain. They actually train their HR well and tell them that we need to onboard people really in a nice manner. So that is what the difference between 3-star and 5-star companies. And 3-star, 5-star doesn't really matter in terms of companies. कि पैसा कितना कमा रहे हैं वहाँ पर. It's all about the experiences that you get. Similarly, alignment में और आ जाता है आपकी strategic and goal alignment करना. It's very important. Most of the time, all the employees who are working in different sectors, different companies, in fact, all of you would be joining an organization rat race का part बनने के लिए. rat race का part बनने के लिए मतलब कि पैसा कमाना है, 2 से 5 जॉब करनी है, आना है, काम करना है, that's all. But उसके अलावा क्या करना है? So what's your goal? What's your personal goal? अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो या अपने लिए कुछ करना चाहते हो, फैमिली को टाइम देना चाहते हो, want to go for travel, you want to read books, ये सब चीज़ों के लिए आपको टाइम चाहिए होगा. और वो टाइम अगर आप ये प्लान करके चल रहे हो कि 60 years के बाद ही चाहिए होगा, it really is not going to make much sense. So ये आपका पर्सनल गोल का अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ कितना अच्छे से हो रहा है is totally depending upon the choice of the organization you are making right now at this stage. ये पहले नहीं था. This experience and exposure when we were starting organization was not there at all, completely missing from most of the organization. But now it has again been reintroduced, especially after COVID. बहुत सारी organization ने सोचना शुरू कर दिया कि और अगर लोग कंपनी में नहीं आ रहे तब भी काम चल रहा है. Work from home is become a reality now. कम 2 घंटे जो हम ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी में आने जाने में वेस्ट करते हैं, उसमें एम्प्लॉय काम कर लेता है, तो वो टाइम फैमिली के लिए यूटिलाइज हो सकता है या उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज हो सकता है. सो ऑल दोस थिंग्स, दैट अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. Performance management is all about that. What is it, when you are putting in your efforts, your 100% effort, आपको ये लगता है कि
मेरे वो एफर्ट्स जितने भी मैं डाल रहा हूँ कंपनी के अंदर, वो दिख रहे हो किसी को, somebody is making note of it। और ऐसा नहीं कि साल के एक बारी में मुझे बता दे कि मेरी प्रमोशन हुई है, मेरा इतना रेज हुआ है। इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मीन्स कि अगर मैं एक महीने में काम किया है मैंने कुछ भी, तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिले कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक। हो सकता है कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, या हो सकता है मैंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक से नहीं समझा हो, या हो सकता है मैं चीज़ें ठीक से नहीं कर रही हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए अगर मुझे एक साल का वेट करना पड़ेगा अप्रेज के टाइम पे जब मुझे फीडबैक मिले, डजंट मेक सेंस। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेज कि आपको हर महीने एक रिव्यू होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, वेदर यू हैव अंडरस्टूड योर गोल्स जो कंपनी ने आपको दिए हैं, टारगेट्स दिए हैं, या जो भी आप उनको केपीआईज कहना चाहो, केआरए कहना चाहो, वो आपने समझ लिए या नहीं। उस रिव्यू से आपको भी पता चलेगा यू आर राइट, एंड पीपल विल लिसन टू यू। यू कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द ऑर्गेनाइजेशन कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सही महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट। So that's about alignment. Similarly, about learning and development, 360 degree assessments होते हैं। 360 degree assessments is basically आप सेंटर में हैं, जो भी लोग आपके रहने से इफेक्ट होते हैं, चाहे वो आपके वेंडर्स हो, कस्टमर्स हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, आपके सीनियर्स हो, आपके जूनियर्स हो, anybody. So that assessment has to be done in the organization on a regular basis. Similarly, coaching, leadership development, professional development, and career pathing, all of them comes under learning and development. Then rewards, like I said earlier also before this slide, कि कंपनी में आपको कितना पैसे के साथ साथ क्या अलग तरीके से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, that is also designed and developed by HR department in the organization. Then the sourcing. Now sourcing is a continuous process. लोग आते जाते रहते हैं, अगर प्रमोशन ट्रांसफर हो रहे हैं तब भी आपको सोर्सिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, सही लोग लेकर आने की। कंपनी ग्रो कर रही है तब भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। निकाल रहे हैं आप लोग, पीपल आर नॉट हैप्पी, दे आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल्सो यू नीड। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर सोर्सिंग, रिक्रूटमेंट, वर्कफोर्स प्लानिंग, जे ब्रांडिंग करना, एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट, राइट। Any questions on this one? What is JHU brand? JHU brand is basically creating a branding, personal branding for the organization. Okay. So it isn't a part of a marketing then? No, it's not part of the marketing. That is what most of the organization feels, that it's part of the marketing only. You have to align. HR department has to align with marketing department for personal branding of the employer. पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है? आप जनरली आप क्या देखते हो लिंक्डइन के अंदर? अगर आपको कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, सो व्हाट ऑल यू सी बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन? डू यू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च? Yes, about the organization, the feedback for the organization. करेक्ट। सो फीडबैक कैसे पता चलेंगे? Through the employees, means ex-employees or the current employees. राइट। सो करंट एंड एक्स एम्प्लॉयज, वो सब आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है? पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट दैट कंपनी इज पुटिंग इन देयर थिंग्स इन दी ऑन द लिंक्डइन। आप देखेंगे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो खुश होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, they are very happy within the organization, they do branding, they become brand ambassador for the organization अपने आप से, nobody tells them, right? So for example, since I have become HR consultant for various organization, हम क्या करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन जो भी, जिनके लिए भी, नॉट फॉर एवरीवन, जिनके साथ हम बहुत खुश हैं, आई मीन यू नो आई सी कि दे रियली वांट टू मेक अ चेंज इन HR, हम उनकी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, talking about their policies, talking about their good things that they are doing for their people, उनकी HR practices के बारे में बात करके। So for example, you see on LinkedIn lot of people posting कि आज मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, आज मैंने 1 साल पूरा कर लिया है कंपनी के अंदर, यू नो आई गॉट अ सर्विस अवार्ड, 6 साल पूरे करने के बाद मुझे एक सर्विस अवार्ड मिला है, गोल्ड वॉच मिली है, ये सब बेनिफिट्स के पार्ट है, यू नो आई गॉट अ न्यू कार बिकॉज माई ऑर्गेनाइजेशन डज दैट। Social media has made it so possible for people to become personal brands for the organization. So organizations can do that themselves, अपने पेज पर ये सब डाल के। अब सपोज आपने एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन लिया, मे बी YSI का आपने सर्टिफिकेशन पूरा कर दिया, you inform your organization and organization put it on their LinkedIn,
कि हमारे एक एम्प्लॉय ने, धीरज कुमार, हैज कंप्लीटेड दिस कोर्स एंड ही डिड रियली वेल इन दिस कोर्स एंड दीज आर द लर्निंग्स दैट ही हैज टेकन. 5 मिनट का जॉब है, एक फोटो जानी और एक सर्टिफिकेट जाना है, दैट्स इट, यू नो. एंड इनडायरेक्टली अ पर्सनल ब्रांडिंग इज डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने आपको प्रमोट करा, उन्होंने ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया कि हम एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी लर्निंग, इन सब पर हम फोकस करते हैं. So this is how employer branding is being done, and that cannot be done only by marketing. Marketing can design and package it in a nice manner. आपकी फोटो दे दी, उन्होंने उसको फ्रेम में लगा दिया, अच्छे से कलर चेंज कर दिए, ग्राफिक डिजाइनिंग करके, फोटोशॉप करके, व्हाटएवर करके उन्होंने वो डाल दिया. That can be done by marketing department, right? But it is a part of HR function, personal branding. And personal branding is a wonderful thing that is going on right now. अगर इसके अंदर मतलब किसी भी फंक्शन में आप हो, आप इसके अंदर कभी भी जा सकते हैं. So it's going to be very good career for next 5-10 years. Any other questions? Anybody else? No? Okay, so let's move ahead. We have a lot to cover. So significance, ये slide छोड़ दिया because it is coming here. Significance of organization. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो HR का क्या सिग्निफिकेंस है उनके लिए, ये हम कवर कर चुके हैं. I'm just taking it in a very short. So right from getting the right people in the organization, उनका प्लेसमेंट, कैसे आप उनको कंपनी में रख रहे हो, उनको कैसे सैलरी दे रहे हो, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएगा. अगेन दे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका ग्रीवेंस हैंडल कर रहे हो, राइट टाइम पे सही पर एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं HR में. देन प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है HR का? Professional significance is we are basically helping every employee in their personal and professional development, right? The more their career progress in the organization, the more benefit HR department gets. Then maintaining healthy relationships. So it's very important that every individual working in a company has healthy relationship with everybody they are working with, whether they are managers, whether senior management, whether they're employees or their peer group. And then last is allocating work properly. Again, because for the personal significance, for your professional growth in the organization, it's utmost important कि आपका जो जॉब एनालिसिस है या आपको जो KRAs या टारगेट्स, जो भी आप कहना चाहो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, दैट शुड बी डन रियली वेल. अगर वो ठीक से नहीं समझ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू पुट देयर 100% इन द कंपनी. ऐसा ही सोशल सिग्निफिकेंस है. अब आप सोचोगे HR का सोशल सिग्निफिकेंस कैसे हो सकता है, राइट? बट every good HR departments can actually bring in different change in the society. How? Number one is by giving dignity of labor in different manner. So dignity of labor क्या कहती है? It's a scientific formula. Again, we call it management principles of management. Dignity of labor says that every employee, as per their skills, as per their degree, diploma, experience, should get benefits to work in the organization, whether financial benefit or indirectly other benefits in the organization, totally as per the requirements. Then providing suitable employment that provides social and psychological satisfaction. Again, I had spoken about it a lot of time again today कि आपको सोसाइटी में, क्योंकि आपका स्टेटस भी इम्प्रूव होना चाहिए, अदरवाइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन रियली डजंट मेक सेंस, राइट? आप बढ़ तो रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ रही है, फाइन, बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, पर उसके अलावा यू नीड टू फील दैट इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी ऑल्सो एज पर योर ग्रेडिंग, एज पर द लेवल्स यू आर गोइंग अप, राइट? यू विल सी कि बहुत सारे सीनियर आप CEOs जो हैं, CFOs हैं, कंपनी के CHROs हैं, गोल्फ क्लब्स की मेंबरशिप्स कैसे मिल जाती है. यू विल सी लॉट ऑफ रिच पीपल प्लेइंग गोल्फ, राइट? Why they can afford golf? क्योंकि एक तो उनकी मेंबरशिप इतनी हाई होती है. प्लस मैनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये माइंडसेट है कि जैसे जैसे आप लेवल अप हो जाते हो, ऊपर वाले लेवल पर जैसे आप आ जाते हो, यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर क्लोज नेटवर्किंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गोल्फ मेंबरशिप्स मिल जाती हैं, राइट? सो इसका एक एग्जांपल दिया है मैंने. ऐसे ही बहुत सारे एलीट क्लब्स की मेंबरशिप मिल जाती है. आप बार बार फॉरेन ट्रेवल्स पे जाने लग जाते हो, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है. When you change the lifestyle, you are actually changing their social status also in the society.
that is why HR becomes very socially significant in terms of taking care of the employee's satisfaction. फिर है maintaining a balance between job available and job seekers. Obviously, there are people who are available in the market. आप सिर्फ यही देखते रहोगे कि 100% लोग मिल जाएं आपको जो एकदम मैच कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब एनालिसिस से, वो नहीं होता है. सो HR कहीं ना कहीं ये रोल प्ले कर सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए. किस लेवल पर कैसे कम हो जाए कि जॉब अगर आपके पास है तो आप उनके लिए राइट लोग ढूंढ कर उसको ट्रेन करके कंपनी में आप लेकर आ सकते हैं. Then eliminating waste of human resource through conversation of physical and mental health. So very importantly, physical health की तो बातें सभी करते हैं, but आजकल mental health has become a major issue, and again because anxiety and stress is becoming too high for everybody in the organization. So इसीलिए it's very important कि socially लोगों का ध्यान रखने के लिए there should be something that HR department should do regularly, तो ताकि लोगों का मेंटल हेल्थ चेकअप भी ठीक से होता रहे. अगेन इट्स अ वेरी डीप कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस टॉपिक, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वंस वी स्टार्ट फिर बाकी का रह जाएगा. सो मेंटल हेल्थ इन इटसेल्फ इज अ लार्ज सब्जेक्ट दैट वी टेक केयर ऑफ इन HR. फिर नेशनल सिग्निफिकेंस क्या आ सकता है? नेशनल सिग्निफिकेंस बेसिकली है कि आप कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो जो आपके natural sources है available in the organization, right from people to time management से लेकर manpower agencies का यूज करके. सो आप अपने ही नेशन में किस तरीके से जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली दे सकते हो, वो दैट इज नेशनल सिग्निफिकेंस. फिर आता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. Then third point is countries are underdeveloped because their people are backward. Right, that is why they are called underdeveloped countries. So किस तरीके से आप organizations के through CSR movements के through या किसी भी society का एक part लेकर, जैसे आप देखोगे बहुत सारी organizations हैं, for example Reliance है. So Reliance runs lot of schools in villages free of cost. तो उनका काम क्या है, क्यों वो ये काम कर रहे हैं? Because they are making a lot of money, they know, and they can really afford these schools by giving free education to the strata उस जहाँ पर वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पढ़ाई को लिए. राइट, सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज टू. दैट इज वाई यू विल सी ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को जिनका टर्नओवर कुछ अमाउंट तक है, वो 2% का अपना बिजनेस का जो भी टर्नओवर आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है वो CSR में दें. CSR मतलब सोसाइटी के लिए जो भी किसी NGO के थ्रू आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो किसी भी तरीके से. सो कंपनी की अर्निंग का 2% आपको CSR फंड्स में देना है. सो दैट इज व्हाट बेसिकली द कंपनीज द गवर्नमेंट वांट्स कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोसाइटी का थोड़ा भला हो जाए. राइट, फिर लास्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेंट्रल सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो लाइक आई सेड, बहुत सारी चीज़ें HR के कंट्रोल में रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप बन सकते हैं. सो यू कैन आई मीन फॉर इन आवर हैंड लॉट ऑफ टाइम्स, बेशक आप एम्प्लॉय होते हो पर आपके हाथ में इतना दिया जाता है पावर कि यू कैन मेक चेंजेस इन द वे पीपल थिंक एंड हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज द राइट काइंड ऑफ सोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. Now, this is about the history of HR, how HR started. It's started in India from 1820. जो 1820 से 1840 में काम होता था उसको कहते थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. फिर ट्रेड यूनियनिज्म आ गए. ट्रेड यूनियन जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि लेबर होते थे उस टाइम पे ज़्यादा, तो ट्रेड यूनियंस के पार्ट बन गए थे. वो चला दौर 1841 से 1909 तक, सबसे लंबा टाइम पीरियड. उस टाइम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में बढ़ी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बढ़ते ही बहुत लोगों को जॉब मिलने लग गए, और किस तरीके से मैनेज किया जाए सोर्सेज को ये नहीं पता था मैनेजमेंट को. तो मैनेजमेंट के बीच में और ट्रेड यूनियंस के बीच में लोग नहीं होते थे, तो वहाँ ट्रेड यूनियन फॉर्म होने लग गई प्रॉपरली, लोग रजिस्टर होने लगे. इसी के ही बीच में बहुत सारी नेशनल ट्रेड यूनियंस इंडिया में रजिस्टर हुई जो आज भी चल रही हैं. आज इतना ज़्यादा उनका महत्व उसमें नहीं जाता है. आई मीन दे डोंट रियली डू लॉकआउट्स एनी मोर, ना ही बहुत ज़्यादा
उस पे जाते हैं धरने पे, ये सब चीज़ें अब नहीं होती हैं। बट उस टाइम पीरियड में ये सब बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपनीज इंडिया के अंदर जो थी वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत चलती थी। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया 1920 से 1940 तक के बीच में। 1945 के बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने ले लिया, एचआर में चेंज आया कि ह्यूमन साइकोलॉजी को जब तक हम लेकर नहीं आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, पीपल विल नॉट बी हैप्पी। सो 1945 टू 1970 दिस वाज कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी रिवॉल्यूशन। फिर आया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एरा। देन सम पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि इन सब चीज़ों के अलावा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करता है, स्पेशली विद द मैनेजर्स जिनके अंडर आप काम करते हैं, तो उसके ऊपर काम करने लगे। फिर आ गया बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए एक सेटअप के अंदर जब आप एक साथ होते हैं। देन आया कॉन्टेम्प्रेरी HRM एरिया 1990 onwards. कंटेम्प्रेरी HR इज स्टिल गोइंग ऑन, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। 2000 के बाद से आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी इज कमिंग इनटू दैट कंटेम्प्रेरी HRM एरिया। आई हियर पीपल आर टॉकिंग मोर अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो ऊपर है, उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस पर, मेंटल हेल्थ पर टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, सो दैट पीपल कैन स्पेंड लेस टाइम ऑन सिस्टम्स डूइंग मैनुअल वर्क and they can spend more time in HR in dealing with people related problems, किस तरीके से उनको सॉल्व करने के लिए। ये उसका थोड़ा ब्रीफ है। आई विल सेंड यू दिस PPT, यू कैन गो थ्रू इट ऑन योर ओन कि हर एक रिवॉल्यूशन का क्या बेनिफिट रहा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती थी, राइट। लाइक इन दिस वन इट इज़ यूज ऑफ मशीनरी मोर, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करते थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के थ्रू। ट्रेड यूनियनिज्म के अंदर हुआ, लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उनके ग्रीवेंस हैंडल करने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस बन गए थे वहाँ पर, जिसको हम ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर कहते हैं। आर्बिट्रेशन कहाँ सुनी जाएंगी, कौन सी लेबर्स कौन से कोर्ट सुनेंगे उनके बारे में, डिविजनल कोर्ट्स के पास पहले जाएगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं, ये अभी भी चल रहे हैं लॉज के अंदर हमारे। देन साइंटिफिक मूवमेंट 1940 तक, ट्रू साइंस, दिस इज वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग आया, किस तरीके से लोगों का कोऑपरेशन बढ़ा मैनेजमेंट के अंदर, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, लोगों को मशीन्स की तरह यूज़ करना शुरू हो गया, इसका ये नुकसान भी हुआ था। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एरिया आया, दिस इज वेयर वी ब्रॉट साइकोलॉजी टू दी सिस्टम। यहाँ पर हमने शुरू कर दिया था MMPIT एंड MBTI का यूज़ करना। ये दोनों चीज़ें उसी टाइम बनी थी, रिसर्चर्स ने इनको बनाया था। MMPIT इज़ बेसिकली मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट। ये टेस्ट आज भी वैलिड है। 16 पॉइंट पे टेस्ट किया जाता है एम्प्लॉय को, आई मीन वन ह्यूमन को, और उस 16 पॉइंट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से उसके अंदर आप ज़्यादा सुटेबल रहेंगे रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से बना हुआ है, उस ब्रेन में आपके आंसर्स के हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि किस तरीके से आप ज़्यादा डेवलप करेंगे। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कीप सेइंग, जब मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम होते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट एम्प्लॉयज़ कि यू हैव टू गो थ्रू इधर MBTI वंस और MMPIT वंस, या बहुत सारे ऐसे टेस्ट अब और आ गए हैं। एटलीस्ट लाइफ टाइम में अपने जितना प्रोफेशनल करियर है उसमें एक बार वो ज़रूर करके देखना चाहिए। इट गिव्स यू राइट डायरेक्शन, वाई यू विल स्टे गुड in this particular direction. MBTI is wonderful tool. You have to take a special certification in that. It's a complete different course altogether in understanding human psychology and obtaining कि किस तरीके से आप उनके दिमाग को जज कर सकते हो कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा लाइफ टाइम के अंदर। So it's called Myers-Briggs-Young topology. That's the full form of it. Right? This is basically to check your skills and aptitude. फिर आई ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, हॉथरन एक्सपेरिमेंट हुए, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात हुई, टोटली रिलेटेड टू हाउ पीपल विल फील गुड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियरल साइंस एरा आया, यहाँ पर आया तीनों चीज़ें, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन माइंड कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को लेकर हमारा सिस्टम वो करेगा। ये सब चीज़ें HR ने हैंडल करी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस टाइम पे उस डिपार्टमेंट को HR नहीं कहा जाता होगा, आई एम श्योर उस टाइम पे इट वाज मोर नोन एज पर्सोनल डिपार्टमेंट,
During that time, some organization called them welfare departments. अलग अलग तरीके से उस टाइम पर इनका नाम लिया जाता था. इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे ये लोग. इनकी थ्योरी, इनके डिजाइन किए हुए साइंटिफिक रिसर्चेस एंड थ्योरीज आज भी पढ़ाई जाती है MBA के अंदर HR में. This is how you learn psychology in HR. They were all psychologists. Ma'am, behavioral science era is also working in armed forces selection board also, na? Yes, that is. See, recruitment जो word आया है, recruitment word has been taken from armed forces itself. पूरा recruitment का selection का जितना भी procedure है, maximum हम लोगों ने army, I mean defense forces से उठाया है. वहाँ कैसे होता था, वहाँ से we started picking it up for corporates and organization. Right? So yes, it has that background to it. फिर आया कंटेम्प्रेरी HR, जो आज हम पढ़ रहे हैं मेजरली अबाउट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट थ्रू HR. किस तरीके से आप ज़्यादा बेनिफिट्स एंड कॉम्पनसेशन, अलग अलग रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन देकर लोग एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकते हैं. बिकॉज पहले वाले उसमें एरा में होता था कि लोग एक ऑर्गेनाइजेशन ही ज्वाइन करते थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू वर्क इन दैट वन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. 35-40 साल जो भी उन्होंने काम करना है उसी में करते थे. Now the time has changed. People are not satisfied working in one organization, क्योंकि human brain की development भी हुई है over a period of time. So जैसे ही technology आएंगी, human brain develop होगा, हम लोगों को नए scientific researches मिलेंगे, हमारा जो demand रहेगा human का, जो भी चीज़ें हमें पसंद आएंगी, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, that will differ. So वो किस तरीके से, that is I say कि knowing human psychology is utmost important. इसीलिए जब आप HR पढ़ोगे तब हम आपको साइकोलॉजी का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं जो इम्पोर्टेंट है टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री. दिस इज जस्ट वेरी ब्रीफ अबाउट इट. आई एम नॉट टेकिंग इट्स वेरी थ्योरेटिकल. यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. कैसे शुरू हुआ था, कब चला, ऑल दैट. फिर मेजरली जो इंडिया में HR में चेंज लाए वो TV राव सर एंड उदय पारिक सर दोनों. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद बोथ ऑफ देम. सो when I was in IIM Ahmedabad, I met Uday Parik sir very briefly. Immediately after me meeting him, next year he passed away. TV Rao sir is very much alive. He is known as father of HRM in India. He is still teaching in IIM Ahmedabad. He is in touch. And he's one of the persons जो अभी भी he's 80 plus, 85 plus I guess, still teaching in lot of institutions, lot of colleges, keeps writing book. Personal management IIPM के head भी है, रहे हैं पहले. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट उन्होंने सेटअप किया. लर्निंग एंड डेवलपमेंट उदय पारिक सर ने सेटअप किया था. सो ISTD जो एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में मेजरली चल रहा है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और बाकी सब जगह इसकी ब्रांचेस हैं. दैट इज डेवलप्ड बाय उदय पारिक सर. उनका जो कंट्रीब्यूशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट को चेंज करने में रहा इंडिया में, वी कैन नॉट रियली डिनाई दैट. सो उनकी ज़्यादा पढ़ी जाती है रादर देन हम फॉरेन रिसर्चेस के नहीं पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा. So these two are really the ones who started this era in India for HR कि किस तरीके से चेंज होना चाहिए, इमोशनल फैक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस होने चाहिए, पॉलिटिक्स रिड्यूस होनी चाहिए. TV राव सर स्टिल टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स. NHRD उन्होंने डेवलप किया. NHRD is basically National Human Resource Development, where people who are in human resource function can become a part of and take membership and learn. So that is one there. फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज होने लग गई. किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट बने और कैसे उनका एम्फेसिस चेंज हुआ. एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर स्टिल रन बाय और मैनेज्ड बाय समवेयर बाय TV राव सर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जब आपको HR मैनेजर बनना है या कुछ भी HR में बनना है, it can be to start with HR executive or directly on a leadership position. How you can actually take care of yourself. I mean, what skills is required? क्या आप चीज़ें अपने आप इंस्टिल कर सकते हो, क्या लेकर आ सकते हो, so that you can handle that department really well. So पहला तो है obviously knowledge. Knowledge can be your degree, diploma. I mean the study of human resource management that you need to surely bring in. Second आता है intelligence. अब इंटेलिजेंस नॉलेज से कैसे डिफर करता है?
Now these two slides are very interactive. इसमें बहुत ज़्यादा theory नहीं है. It's all about experience exchange. So I would really love अगर आप लोग कैमरा ऑन करके थोड़ी बातचीत कर लो, so that we can enjoy some time period. So what do you think? Why? How intelligence is different from knowledge? Intelligence is more about applying the knowledge or how to use the knowledge. Okay. How to deal with people's. Okay. Correct. Yeah. How to deal with in this sense for HR manager? Yes. Right. So knowledge is basically आपने acquire कर लिया. Knowledge. हाँ, कुछ भी पढ़ लिया आपने. Sorry. Yes, you were saying something. Oh, sorry. Yeah. So knowledge is like something like which we have gained from the studies or from the experience. The intelligence, like how we are implementing that knowledge to that particular thing. Correct. How we are good in implementing that knowledge. Absolutely. So now इसका एक example देती हूँ. Right? Maybe that can really help you understand this. Why we are talking about these two. बहुत सारे different cooks होते हैं, chefs होते हैं. Right? हो सकता है कि वो एक ही जैसी चीजें बहुत बनाते हो. तो सपोज पनीर पसंदा बनाना है, सभी कुक्स को आता है, रेसिपी मोर और लेस सेम रहती है, बट स्टिल अगर आप अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग शेफ्स के हाथ से वो पनीर पसंदा खाएंगे, उसका टेस्ट अलग आएगा. करेक्ट. सो नॉलेज दे अप्लाइड इज द रेसिपी दैट दे यूज्ड, और उसके अंदर अपना क्या तड़का लगाया या अपना क्या उन्होंने डाला, so that पनीर पसंदा became much more different, is what intelligence is all about, right? So in HR, why intelligence is required? Because you're dealing with people throughout. और like I said, you know, अभी तो मैंने आपको शायद जो problems हम really face करते हैं practically on the surface, उसके शायद 2% भी नहीं मैंने इस क्लास में बताया, because 2 hours is too less to talk about that, right? So lot of problems, and I'm sure people who are working in organization जहाँ पर आपका 3-4 साल का experience start हो गया, आपको बहुत सारी problems के बारे में पता भी होगा कि क्या आती हैं on a practical level for yourself as an employee, right? और किसकी बात सुनी जाती है और किसकी नहीं सुनी जाती है. So intelligence in human resource is about applying the solutions. कि किस तरीके से आपने solutions को apply करना है so that the maximum people in the organizations remain happy. Right? You can call it कि इस तरीके से diplomatically लेकर आना है solutions को, इस इतने beautifully तरीके से उसको implement करना है या introduce कराना है, that people are always happy about the changes that is happening in the organization, not the other way around. Right? फिर थर्ड आता है communication skills, and now communication skills does not mean English language, right? English language is हम लोगों ने उसको ऐसे ही हवा बना रखा है. You can really talk in Hindi or in your other languages जहाँ पर भी industry है, and still work in HR department nicely. See, English is important purely because maximum communication is happening in English. In terms of mails आपको English में लिखने पड़ते हैं, right? वो सब चीज़ें आपको करना पड़ता है. But जहाँ पर बात करने का वो आता है, because I have experienced it myself. I take a lot of training programs, design development programs. अब हम I went to a place called कोलकाता. कोलकाता के भी पास में एक छोटा सा शहर है आसनसोल. वहां जाकर उन्होंने कोल इंडिया वालों ने कहा कि आपको उस ब्रांच के लोगों को ट्रेनिंग देनी है. अब दे वर मैक्सिमम पीपल हु वर जस्ट स्पीकिंग बंगाली. हिंदी भी नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आता था. So I had to change my dialect. I learned some basic words at least. जितने भी 20-25 दिन का टाइम था हमारे पास ट्रेनिंग डिजाइन करने का. I made sure कि I got in touch with the friends of mine कि क्या क्या फ्रेजेस हैं HR के जो मैं बंगाली में यूज कर सकती हूँ, जिससे थोड़ा सा ह्यूमर ऐड हो जाए, जिससे थोड़ा सा अपनापन ऐड हो जाए, सो दैट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन हैव विद पीपल. बाकी सब ट्रेनिंग आप इंग्लिश हिंदी में कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ इतनी जल्दी नहीं कन्वर्ट किया जा सकता था, but at least few words you can do that. So communication skills means that जो भी आपके दिमाग में है, whatever you have, the skills, the knowledge, the intelligence that you have, वो आप communicate कर पाओ और सामने वाला समझ जाए आप क्या कहना चाहते हो. That is the level of communication skills you require. Which means अगर आपको कभी strict होना है तो आपको strict होकर क्या कहना है वो भी आपके दिमाग में रहे. Anger नहीं दिखाना है, strict रहना है, firm रहकर, polite रहकर. That is what HR do.
उसके साथ आपको कहाँ पर इतना सॉफ्ट रहना है कि यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल. So one individual as an HR and handling all these emotions in people so that you can communicate really well is communication skills that we're talking about. Then fourth is objectivity and fairness. अब as an HR अगर आप बाकी सारी दुनिया की तरह दिमाग में stereotypes लेकर चलोगे, bias लेकर चलोगे, so you will never be successful. तो सबसे पहले HR बनने के लिए आपको वो biases हटाने पड़ते हैं. Biases कैसे होते हैं? There are 12 type of 14 type of unconscious biases, right? Unconscious biases ऐसे हैं जैसे कि हम गोरे काला में फर्क कर देते हैं. गोरा है तो अच्छा है, काला है तो अच्छा नहीं है. सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर हिंदुस्तान में ये है. फिर रिलीजन को ले आते हैं बीच में. अभी चल ही रहा है इतना सब कुछ रिलीजन को लेकर इंडिया के अंदर. फिर हम ले आते हैं छूत-छात को लेकर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, आई डोंट नो कहाँ से कास्ट सिस्टम को ले आते हैं. अब अगर एक HR इन सब चीज़ों में बिलीव करेगा तो वो फेयरनेस या ऑब्जेक्टिविटी कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेकर आ सकता है. So first thing that you have to work in an organization is to remove all these unbiased biases. अभी तो बेसिक वाले मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल जो चलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. देयर आर मोर. हम ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं, आप सिलेक्शन कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो किसी को हायर करने के लिए, आप कहोगे यार इसको ले लेते हैं क्योंकि ये मेरे पास वाले गाँव का है, तो अच्छा ही होगा क्योंकि मैं भी वहीं का हूँ. स्किल नहीं देखी, उसके एक्सपीरियंस नहीं देखा, उसकी ग्रेडिंग नहीं देखी, ज़्यादा कुछ नहीं देखा, उससे ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय आपके पास सामने खड़ा है, बट कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस बायस आ गया और आपने हायरिंग गलत कर ली. राइट? सो दीज आर दी काइंड ऑफ फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी दैट यू नीड टू ब्रिंग व्हेन यू आर जॉइनिंग द HR डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. फिर है लीडरशिप एंड मोटिवेशनल क्वालिटीज. एवरी टाइम, चाहे आप जूनियर पर्सन हो HR में, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए तो HR डिपार्टमेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए, बट HR डिपार्टमेंट के पास HR डिपार्टमेंट नहीं होता मोटिवेट करने के लिए. सो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटर ऑल थ्रू योर करियर, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई दिस मोटिवेशनल क्वालिटीज आप देखोगे बहुत ज़्यादा कि HR में आप जितने लोगों को देखोगे वो हमेशा बहुत स्मार्टली ड्रेसअप रहते हैं. डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है उनका, पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी होती है. क्यों होता है ये सारी चीज़ें? क्योंकि वो उनको दूसरों के अंदर लेकर आना है, पॉलिसीज डिज़ाइन करनी है, कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करानी है सब चीज़ें. तो जब वो खुद करेंगे तभी वो सबको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस लीडरशिप एंड मोटिवेशनल क्वालिटीज शुड बी देयर इन दैट इंडिविजुअल हु इज टेकिंग केयर ऑफ द HR डिपार्टमेंट्स एनीवेयर. फिर इमोशनल मैच्योरिटी. अब इमोशनल मैच्योरिटी क्या है? इट्स डिफरेंट फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग, जो एम्पैथी के अंदर आ जाता है कि हम आपके शूज में होंगे तो हम कैसा फील करेंगे, राइट? अगर उस घर में बैठे होंगे तभी हमें पता चलेगा क्या चल रहा है, या इफ आई एम इन योर शूज देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस. वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल मैच्योरिटी इज कि किसी एम्प्लॉय को गुस्सा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है, सो अंडरस्टैंडिंग ऑल 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों वो काम नहीं कर रहा है. सपोज एक एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है 3 साल से, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक ठाक रहता है, खुश रहता है, सब कुछ है. सडनली उसकी बहुत सारी लीव्स होनी शुरू हो गई, सडनली उसका लोगों के साथ काम करना बंद हो गया, सडनली ही इज नॉट हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आप उसको क्या करोगे? आप कहोगे कि निकल जा, कंपनी छोड़ के चला जा. दैट्स द इजीएस्ट वे. बट टू मैनेज दैट पर्सन विद योर इमोशनल मैच्योरिटी इज टू अंडरस्टैंडिंग क्या चेंज आया और क्यों चेंज आया. Is there anything happening on the personal level? There is something wrong with the family? Is there any medical issues? So उस perspective से आपको उस employee को जानना होता है, right? So that's called emotional maturity of managing and handling thing in a manner so that the people that you're dealing with should remain acknowledged all the time. Then empathy. Empathy is knowing what people are feeling. It's not sympathy. It's knowing what they are going through. It's understanding their problems. It's knowing what they want by getting into their level. किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो लेबर लेवल पर हो या सीनियर मोस्ट लेवल पर हो, हर एक का इमोशनल लेवल अलग अलग होता है. अंडरस्टैंडिंग दैट एंड ब्रिंगिंग दैट सोल्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर 8 क्वालिटीज. इसके अलावा देयर इज वन मोर which is knowing the technology these days now. Right? So you need to be going advanced with the technology that is advancing.
विच इज़ HRIS के बारे में आपको पता हो किस तरीके से नए सिस्टम्स के साथ बिकॉज जितने ज़्यादा अच्छे सिस्टम्स के साथ आप काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आओगे उतना आपका मैनुअल वर्क कम हो जाएगा बिकॉज पेपर वर्क मैनुअल वर्क डॉक्यूमेंटेशन बहुत हो जाता है HR में स्पेशली कंप्लायंस से रिलेटेड PF फॉर्म्स ESI फॉर्म्स ये सारी की सारी चीज़ें तो वो बहुत सारा कंप्लायंस है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर हमें करना पड़ता है सो वो मैनुअल वर्क कम हो जाएगा जैसे जैसे आप अच्छे सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते रहेंगे इस सिस्टम्स की मतलब मेरा है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इन दी कंप्यूटर्स उतना ही ज़्यादा टाइम आप इन चीज़ों में दे पाएंगे सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग टेक्नोलॉजी इज अनदर क्वालिटी शुड बी देयर इन HR एंड विद दैट it's a big thank you for attending and listening and if you have any questions please feel free to ask. Some of you can now open the cameras at least so now talk khatam ho gaya session hai Ma'am, there has been so much of a talk about the emotional intelligence and the empathy and all, but how it is being driven through the HR? It's being discussed and all, but is See, it it's practically not happening? just बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होता है See, अगर हो नहीं रहा तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं रह रहे होते right? Organizations are successful because there is a balance for emotional intelligence in the organization कहीं ना कहीं पर empathy है and if not through मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑर्गेनाइजेशन में empathy is not just in HR manager it should be in every manager who is handling people वो चाहे सेल्स मार्केटिंग हेड हो मार्केटिंग मैनेजर हो सेल्स मैनेजर हो जिनके भी अंडर टीम है काम कर रही है बिकॉज सी पीपल मैनेजमेंट फंक्शन तब बनता है जब लोग पीपल को मैनेज कर रहे हो पीपल मैनेज करने का मतलब कि आपको इमोशनली उनके साथ जुड़ना पड़ता है अगर आपके साथ इमोशनली नहीं जुड़ रहे हैं किसी भी लेवल पर दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो नहीं जानते हैं इस आर्ट को कि किस तरीके से मैनेज करना है या आप उनके साथ ढंग से ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ नहीं पाएंगे you are just working with them then it's just a job that you're not enjoying your job it's not a career that you are looking forward to so most organizations are doing it some छोटी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है ये सब चीज़ें आने में क्योंकि पहला उनका फोकस रहता है कि कैसे अपना सेल्स रिवेन्यूज इंक्रीज कर ले किस तरीके से थोड़ी ग्रोथ अचीव कर ले उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स को दोनों लेवल पर काम चल रहा है जहाँ स्टार्टअप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ वो लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों पर बहुत सारे सिमिलरली लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आप देखेंगे वहाँ बहुत काम हो रहा है इमोशनल जो MSME सेक्टर है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाला हाँ इस पर कम फोकस किया जाता है बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय लालाज आई मीन people who are not really professionally qualified themselves तो इसीलिए वो समझते नहीं इन चीज़ों को Well, what was you have taught today? So I was just trying to correlate with my office experience. So I found that because many of the things is not happening. Because although the Shriram Finance Group is it's a big company, but like many Shriram of the Finance is policies a are good not company being implemented. Right, and I'm working in a Shriram Automobile India Limited. So it's a 100% subsidiary from the Shriram Finance Limited. But I found that because many of the things not being implemented, and like as you said, that because the HR should be, it plays a major role to make the policies and when the retention level of the employee and all. So, but like as I'm seeing that as I'm going through from the last 1 year, so I found that because there is some kind of toxic environment in the group. And although because the employee, they 50% more than 50% of employees they are working from the last 20-25 years in this group. So they they try to exploit the freshers like who recently joined the organization and all. And although like the you always the HR will always listen to the top management. That is that is sure. So Everybody. they will not like listen to right. So they will not listen to the employee who had recently joined. Although he's facing the problem is quite genuine also. But still there is no solution for this. So either no you should solution है see
solution है, and I think their understanding will also come. But it's also the matter of time only when they understand. See, like you said, most of the employees are 25, working from 25, 26 years. So वो उन्होंने already toxic बना दिया है company को. Toxic not because people have stayed, toxic because they have not changed the way. See, why it is important to have some freshness in the organization through new employees is कि नए perspective add हो जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं, आपको नई कंपनीज के बारे में कुछ पता चल जाता है किस तरीके से चल रहे हैं. एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चेंज ऑफ मैनेजमेंट, आई मीन द माइंडसेट ऑफ मैनेजमेंट, कि वो कितना चेंज करना चाहते हैं. बिकॉज श्रीराम ग्रुप कम्स अंडर एमएसएमई सेक्टर, राइट? इट्स नॉट रियली अ वेरी लार्ज ग्रुप राइट नाउ, depending upon the turnover that they're earning. I know Shriram Group really well because my uncle worked there for almost I don't know how many years. So this group gives a lot of value to experience, people who have experience. So my uncle retired from there at 60 years of age. He's 82 now. 22 साल से उन्होंने उनको कंसल्टेंट रखकर काम करा रहे हैं उनके साथ, right? So they are still going ahead and helping, taking that help. So I know they give a lot of value to older people in the organization, और उसकी वजह से toxicity आ जाती है. That's a valid point. Because somehow आप अपने घरों में भी देखेंगे, you know, every 5 years the generation gap is changing. इतना thought process में change है. Imagine now if you have a child, अगर आपके घर में किसी का भी बच्चा है तो कोई बच्चे को आपने देखा हो, 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो और वो सब कुछ जान जाता है. कैसे मुझे नहीं समझ आ रहा है, आज तक नहीं समझ आ रहा. So that human brain which is evolving, कि उसको पता है कैसे इसको ऑपरेट करना है, बटन कहाँ दबाने हैं, कैसे हेलो करना है, एवरीथिंग, राइट? दे लर्न एंड सी फ्रॉम अस एंड दे लर्न इट. सो जिस तरीके से जनरेशन चेंज हो रहा है, एचआर उसको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अडेप्ट नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन इस चेंजेस को, देन दे विल बिकम रिडंडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये रिटेंशन वाला प्रॉब्लम उनको बहुत खाने वाला है आगे आने वाले टाइम में. हो सकता है अभी भी कर रहा हो, यस मैम कर रहा है, आई उनकी कंप्लीटली एग्री विद प्रॉफिटेबिलिटी में कर रहा हो, उनका मेंटल हेल्थ में कर रहा हो, बट द ओनली थिंग इज कि कब तक आप अवॉइड कर सकते हो, राइट? एक राइट. होता है एंड ब्लास्ट होने से पहले आप कब तक अवॉइड कर रहे हो. सो दे आर अवॉइडिंग मैम, इट, बट टिल व्हाट टाइम? तो वही मैम जस्ट यू नो बिकॉज अभी मतलब लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में like every you know every day you know 4 to 5 people they used to you know joining and every day they are few of the people are leaving the job. तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चल ही रहा है बिकॉज अभी स्टेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग्स तो अभी नहीं है इसमें, तो वो देख रहे हैं. एंड उनको हमारा नाम सजेस्ट कर देना, आई विल कम एंड विल चेंज दैट. That is what we do. I'm not marketing myself, I'm just saying. See, the reason why I left company in a large organization, in all the large organizations, purely with the same mindset. I wanted to give difference to MSME sector. We work purely for MSME sector क्योंकि वो ज़्यादातर रन ही लाला कंपनीज होते हैं. पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उनको नहीं पता HR क्या है, उनको नहीं पता साइकोलॉजी क्या है, उनको नहीं पता पीपल फंक्शन क्या है. सो वो यूटिलाइजेशन अभी भी HR का रिसोर्सेज की तरह कर रहे हैं. दे फील कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमें 8 घंटे 10 घंटे की सर्विस मिलना ही है बस. उस सर्विस के अलावा उनको नहीं पता कि क्या इमोशनल फैक्टर से कितना स्ट्रेस जा रहा है, कितनी एंग्जाइटी जा रही है, किस सिचुएशन में और किस कंडीशंस में काम लेना चाहिए. इमेजिन आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, इट्स अ वेरी लार्ज ब्रांड, मैं नाम नहीं ले सकती यूट्यूब पे उनका, वेरी लार्ज क्लोथिंग ब्रांड. बहुत सुंदर दिखता है ब्रांड बाहर से सब कुछ, बट पीछे जो छोटी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके लिए क्लोथ्स, वो छोटी कंपनीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है. वहाँ हम लोग एक कंपनी के साथ एसोसिएट हुए एज अ कंसल्टेंट, एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट द लेबर टोल्ड मी कि मैम हमारे लिए टॉयलेट्स नहीं है यहाँ. वुमेन आर सेइंग दैट. सो इमेजिन वुमेन लेबर्स आर सेइंग कि हमारे लिए टॉयलेट्स नहीं है, तो वो कहाँ जाए? पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 50 से 60 औरतें वहाँ काम करती हैं और पढ़ी लिखी भी नहीं है, मतलब सेमी स्किल्ड हैं. वो कहाँ जाए वॉशरूम के लिए, राइट? सो इजंट इट एन ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक नीड रिक्वायरमेंट कि उनको इतना तो दो. मुझे समझ ही नहीं आया. मैंने जब मैनेजमेंट से बात करी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाई आर यू बिकमिंग सो इनह्यूमन? इट्स अ वेरी बेसिक नीड. टॉयलेट जाना है किसी को, और वो भी एक औरत को, तो आपको उतना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. इफ इट वुड हैव बीन अ मेल, स्टिल आई वुड हैव अंडरस्टूड. हाउ कैन यू बिकम सो ब्लाइंड टू दिस?
So then they understood. Right, उनको ma'am. वो समझाने वाला, उनको दिखाने वाला, कोई ना कोई शीशा दिखाने वाला चाहिए उसी लैंग्वेज में, क्योंकि हमें डर नहीं होता एज अ कंसल्टेंट. You are not really just getting money, so you are a little एम्प्लॉय नहीं है आप, तो थोड़ा सा बोल्ड होकर बोल सकते हैं. Correct. एम्प्लॉयज के साथ इंटरनली थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली एचआर इज अ फंक्शन एंड एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो डर जाते हैं मैनेजमेंट से, they don't speak much. Also, ma'am, one more thing, like, because is it possible that the person who is handling the top, like who is sitting on the top management, and although he or she doesn't have experience of that particular department, but that person is handling that department. So, because I will just tell you the example, एक department के HOD है, so he is handling that marketing department, but उनके पास कोई marketing experience नहीं है. So from the last, from the last 1 year, since I joined, so वही है कि because the marketing experience, there are many things which we cannot explain. But हाँ, ये हो सकता है इनको करके दिखा सकते हैं, but explain नहीं कर सकते. Explanation कभी कभी बहुत difficulties आती है अगर बंदे के पास experience नहीं है. Right? तो अभी ये भी देखा है कि because पिछले काफी टाइम से, because कोई भी marketing का बंदा हायर नहीं है अभी कंपनी में, but the top management है वो मतलब ऐसे ही चला रहे हैं मार्केटिंग का. तो ये सब भी ऐसे ही चला थोड़ा रहे हैं प्रॉब्लम. उसका वही, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग किसी टॉप मैनेजमेंट हैज टू चेंज देयर थिंकिंग. जो भी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू देम. अब उनके सामने क्योंकि कोई बोल नहीं सकता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबॉडी एल्स इज एम्प्लॉइज, सो वो आना चाहिए. एंड every function, it's not just about HR, it is sales and marketing, everything is evolution, that evolution is happening everywhere. अब marketing जैसे पहले होता था, बाहर जाके कैनोपीज लगा लिए, टेंट लगा लिए, लोगों को बुला के पर्चे पकड़ा दिए, ये सब कर दिया, वो सब मार्केटिंग नहीं होता है ना. मार्केटिंग इज मोर टुवर्ड्स डिजिटल ज्यादातर, राइट. 60% 70% फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट हैज टर्न इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, और बाकी जो मीडियाज और उसके साथ होता है. तो वो मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग जो चेंज हुई है, अगर वो किसी इंडिविजुअल में है ही नहीं, तो वो डिपार्टमेंट रन कर ही नहीं सकता है. आप ये सोच लो कि वो डिजास्टर्स के लिए बैठे हैं, और वो कब होगा ये पता नहीं. तो मैम मार्केटिंग में टू थिंग्स है अभी, बिकॉज ऑनलाइन मार्केटिंग इज गुड, बट उससे क्या, तो उससे कन्वर्जन नहीं होता, सेल्स कन्वर्जन नहीं होता. बट हाँ वो है कि फिजिकल प्रेजेंस के लिए अलग अलग चीजें ले रहे हो. जो ऑनलाइन मार्केटिंग जिसकी कन्वर्जन की आप बात कर रहे हो, दैट इज बेसिकली लीड जनरेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के अंदर ही आता है. मार्केटिंग का जो मेजर काम है वो समझना है हमें. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का काम है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिनके लिए वो वैल्यू एडिशन करता है. ऐसे डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है? एआई के थ्रू, सपोज आप अगर फेसबुक पे हैं या आप इंस्टाग्राम पे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी इंटरेस्ट उठा लेगा कि सौरभ जायसवाल ने अपने इंटरेस्ट में डाला हुआ है, उसको ये चीज़ें पसंद है. तो आप देखोगे आजकल आपके फेसबुक पे या आपके किसी भी जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उस पर सिमिलर ऐड आने लग जाती है. अगर आपने मिंत्रा से कपड़ा खरीदा है, आपके पास सारी ऐड आनी शुरू हो जाएंगी. अमेजन की भी, स्नैपडील की भी, फ्लिपकार्ट की भी, सब तरीके की एड्स आनी शुरू हो जाएंगी. व्हाई? बिकॉज एआई इज पिकिंग अप दैट डेटा इंफॉर्मेशन. सो मार्केटिंग का काम यही है कि आपके इंटरेस्ट को देख कर, that is why we are saying that privacy has gone to zero level in India and everywhere through social media. जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है फोन पर या किसी भी स्मार्टफोन पर, आपने अपनी प्राइवेसी जीरो कर दी. Now that privacy is used by marketing sector in understanding your interest. वो आपकी हर चीज जो आप खरीद रहे हो, जहां पर आप पेटीएम से पैसे पे कर रहे हो, गूगल पे से कर रहे हो, वो आपकी वो सब चीज नोटिस कर रहे हैं. And then related to that, they start giving you that advertisements. उस एडवर्टीजमेंट को जितना आप देखोगे, आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा, और आप वही प्रोडक्ट्स खरीदने जाओगे. नेक्स्ट टाइम आप मार्केट जाओगे, आप नहीं बोलोगे, आपका बच्चा बोलेगा, आपके घर परिवार का कोई बोलेगा, कोई ना कोई बोल देगा. आई इमेजिन अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस क्लास के बाद, टू सी की हाउ एआई इज वर्किंग. अपना फोन ऑन रखना, सिर्फ ऑन रखना, कोई ऐप नहीं खोलना. आप किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना, घर में किसी से भी. फॉर एग्जाम्पल, you want to go to Himalayas or you want to go for holidays to Kashmir. या आपने अभी बोला
अभी द मोमेंट आई विल ओपन माय फेसबुक यू विल सी कि कश्मीर के एड्स आने शुरू हो जाएंगे या हिमालय से रिलेटेड एड्स आने शुरू हो जाएंगे. So everything that you're talking with your smartphone on is being now used by companies for marketing. इस तरीके से वो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है. Right? So this is how marketing is being done. पहले क्या होता था कि पहले हमें उनको एफर्ट डालने पड़ते थे, which is called offline marketing, जिसमें ATL, BTL आ जाता है. BTL is below the line marketing and ATL is above the line. Above the line is जो टीवी एड्स एंड ऑल आप देखते हैं सारा कुछ. बिलो द लाइन इज जो भी आप ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज देखते हैं, मॉल में हो रहा है, डायरेक्ट जी ब्रांड्स देख लिए, पोस्टर्स देख लिए, ऑल दैट. राइट. सो ये तीनों चारों फॉर्मेट्स होते हैं मार्केटिंग के, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को समझने चाहिए. राइट. चारों का अलग अलग फर्क पड़ सकता है, चारों का अलग अलग तरीके से एडवांटेज आप उठा सकते हैं, चारों का आप अलग अलग तरीके से ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे बच्चे को बहुत अच्छी सी एडवर्टीजमेंट दिखाओगे, नेक्स्ट टाइम आप मार्केट जाओ वो आपके पीछे पड़ जाएगा, मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चा दिखाया, कुछ कार्टून दिखाया, उसको वो पसंद आया. सो यू नो दिस इज हाउ दे आर चेंजिंग. पहले कौन डिसीजन लेता था? हमारे पेरेंट्स ले आते थे सामान, हमें पता भी नहीं होता था. अभी आप मार्केट जाओ, मॉल जाओ, आपके हाथ में रहता ही नहीं है कुछ. योर चाइल्ड इज सेइंग समथिंग एल्स, योर वाइफ इज सेइंग समथिंग एल्स, योर हस्बैंड वांट्स टू डू समथिंग एल्स. तो 3-4 लोग घर के सब अलग अलग डायरेक्शन में अपनी अपनी इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स द इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग. अभी तो TTL भी आ गया मैम, फूड लाइन एक्टिविटी. या दैट इज सोशल मीडिया. राइट. और उसके अंदर भी अब पेड वाला है, अनपेड वाला है, ऑर्गेनिक है, अनऑर्गेनिक है, बहुत सारी चीजें हैं. सो द मोर यू गो इनटू द मार्केटिंग यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट in details. But yes, your organization needs leadership change. उनका mindset थोड़ा change करना बहुत जरूरी है. I'll try and get in touch. You told me the name of the organization. I'll try and see if they look into that or not. बाकी पता नहीं, देखते हैं. Right. Anybody else has questions? Any other doubt or questions that you have? I'll share this PPT through sir, and then let's see how it goes. Thank you so much for attending. Good night. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.